Sometimes we may explain the idea. Sometimes we may explain the task. Sometimes we may explain the skill. So concept, idea, task, and skill. So these are the things which have been which teachers are doing. But in a teacher-centric environment, everything was explained, facilitated by the teacher. Many things could not be happening. This is the first problem. तो क्योंकि हमारे पास जो 50 मिनट या 55 मिनट का जो भी समय है, within the time I want to complete everything. Sometimes it may happen, sometimes it may not be happening. So the question comes, what efforts should be made? मतलब इसमें हमें क्या करना चाहिए ताकि we can make the things different. First problem. Second problem, मेरे क्लासरूम में जैसे बाकी जगह भी है, क्लासरूम में स्लो लर्नर्स बैठते हैं. We need a special strategy for them. Average learners बैठते हैं. We require a different strategy for them. और gifted learners, slow learner है, average learner है, gifted learners, और introverts है, बच्चे बोलते भी नहीं है, उनसे बुलवाना है. एक्सट्रोवर्ट्स है, ज्यादा बोलने वाले हैं, उनको कंट्रोल करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट, इस देश में भाषा भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. हम तो एक ही लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश तो नहीं कर सकते, एक ही मराठी में नहीं कर सकते, हिंदी में नहीं कर सकते, अलग अलग इश्यूज हैं. तो these are my problems which I started looking into the system. तो मैंने सोचा था कि भाई why don't we अभी क्या हो रहा है, everything in a four walled of the classroom में जब तक टीचर, अच्छा ये तो एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स. एंड देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. व्हेन स्टूडेंट कम टू द कन्वेंशनल क्लासरूम, he learns from the teacher, he learns from the fellow students. Number 3, he learns from the digital and non-digital material. And fourth one, he learns from the environment. तो ये चारों चीज जो है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. अब इश्यू क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ? सो हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग काफी नहीं है. आई थिंक यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय दिस टाइम. ओनली कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग इज नॉट इनफ. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज what are the other options are available, what are the other options are available, so that the teacher can able to create an environment which is flexible, adaptable, personalized, and give the engaging learning experience. अभी करेंटली हम सब लोग जो है हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग में whatever best it is possible for us, we have been doing it. But what is happening over here, हमने जो चीज हम कर तो रहे थे, everything is not enough. So conventional classroom itself is not sufficing our requirements. Then the question comes, what is the alternative? इस बीच में 2020 में कोरोना आया. कोरोना ने हमारे सामने बहुत अच्छे रास्ता दिखाया था. कोरोना ने हमारे सामने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया था. वो है ऑनलाइन, यूजिंग ऑनलाइन डिलीवरी platforms. Online delivery platforms. Please confirm my voice is reaching you with the help of the emoji. Please confirm with the help of emoji. मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रहे हैं? एक बार confirm कर लीजिएगा please, all the participants. Thank you.
कभी कभार थोड़ा एक आता, थैंक यू तैया जी, बराबर। कम से कम आप तो है यार, अभी तो सारे पार्टिसिपेंट्स आर स्विच्ड ऑफ देयर कैमरास, आई वाज लिटिल लिटिल अनहैप्पी। ओके, कुछ लोग तो ऑन तो करके रखे, बिकॉज एज ए टीचर, मैं ट्रेडिशनल टीचर हूं, कम से कम आई टू आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। खैर, सो कोरोना ने क्या किया था, कोरोना हैज गिवन ए वंडरफुल ऑप्शन फॉर अस। तो कई सालों से नहीं हो पा रहे, कोरोना हैज डन इट। सो ड्यूरिंग कोरोना पीरियड व्हाट वी डिड, वी आर वी यूज्ड ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये सारे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो प्रश्न जो 10 क्वेश्चंस मैंने रफे साहब को दिया था, ये सारे मेरे डिस्कशन के ऊपर है। बट तुम्हारा बाद में ये मत कहना कि सर ये मैंने एक भी प्रश्न प्रोफेसर साहब का तो लिख नहीं पाया। ओके, सो कोरोना ने, so what is happening, our conventional classroom teaching is a face to face mode of teaching which is supporting the synchronous mode of learning. Okay, synchronous means real time. I am real, my students are real. Whatever I could able to say, students can able to understand. But what was happened during the corona period, classes were closed, so we have moved to the online mode. Online basically consisting of two important points. ऑनलाइन में सिंक्रोनस है, ऑनलाइन में एसिंक्रोनस है। ऑनलाइन सिंक्रोनस, ऑनलाइन एसिंक्रोनस। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which is supporting the synchronous mode is Zoom, Google Meet,
Okay, friends, please confirm my voice is reaching you, please. Yes, sir. Your voice is reachable, sir. Sorry, I'm extremely sorry. There are all comedy of errors are happening today, so I may please be excused today. So what I've been discussing before that. So during the Corona period, we have two interesting developments happened. One is about the issue of online synchronous platform, and second one is about the online asynchronous platforms. In the online synchronous platforms means we all know very well about the platforms like Zoom, Google Meet and all. And of course, online asynchronous platform means one of the example for the online asynchronous platform is about the using the Google Classroom and so on and so forth. So in the meanwhile, what happened in 2020, the government of India has has announced the national educational policy. In the national educational policy, that a lot of things happening in the national education policy. What are the things happen? Like we have there are technology integration. So many things have been said. And one of the important thing which has been said in the national education policy is on integration of technology in teaching, learning, and the assessment. Okay, so and also they have suggested some interesting and important points which I'm going to show you. Dr. Rafi, please enable the screen sharing for me, please. Please enable the screen sharing. Dr. Rafi, please enable the screen sharing, please. Yes, sir. I will make you a co-host. Yeah. So what happened? One of the important thing, because I've told you the problem is class time is very low. Students are learning, everything has to be facilitated by the teacher only. There are so many options are now available. So teacher could not be the only source of information. So there will be lot of things which have been available over there. Now, what is important for us is how can we create that kind of an environment which can be done much more easily and comfortably. One of the interesting part which is going to be used in this process could be the blended mode of teaching. In the blended learning environment, there are certain things like what they have been talking about, how to use this environment much more easily and comfortably is one of the point which to be which has to be shared. So in the blended learning environment, what happened? Blended learning is basically blending of the teaching learning experiences in online and offline environment. This is one of the important point to be noted down. Blended learning is not something which is totally different, but yes, blended learning is basically blending of the teaching learning experiences in online and offline environment. I think I am going to start my presentation with that slide, and that is one of the important point which I just want to bring to your kind attention over here. So look at this point which I just want to which is coming over there. This is the title of my presentation. In this presentation, which I just want to I just want to talk about fine. Now national education policy is talking about the blended mode of teaching. National educational policy is also talking about the experiential learning environment. National educational policy is talking about the learner-centric environment. So the question comes, ये सारे करने के लिए what type of competencies teachers must be having? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, if it is only theoretical competency, things will not work. So what I'm trying to say, what are the digital skills and competencies required to be done for the teacher
for interactive and personalized learning. This is very, very important. And why this interactive and personalized learning environment? Whether it is a conventional mode of teaching, whether it is an online, आपने एक चीज नोटिस किया था, जो रिसोर्स पर्सन आपसे ज्यादा चैट कर रहे हैं, रिसोर्स पर्सन आपको कुछ एक्टिविटी दे रहे हैं, तो नेचुरली क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. ओनली थियरिटिकल एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए तैयारी सर को कह रहा हूं, सर एक बार बताते जाइएगा मेरा तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. आज ऑल कॉमेडी एरर्स आर हैपनिंग सर. मेरा डेस्कटॉप इज नॉट वर्किंग, मेरा लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, मेरा मोबाइल फोन, sometimes some days are very, very funny days. So my point is that, so what is important, students भी ये हमसे ये मांग रहे, learning जो है flexible हो, right down, adaptable हो, personalized हो, and engaging हो. Students are asking for 4 important things in this country. First of all, learning should be flexible. And thanks to we got MOOCs courses. Adaptable, वो मोबाइल फोन से भी चले, आईपैड से भी चले. एंड पर्सनलाइज्ड, जो स्टूडेंट की डाउट, जो जिस स्टूडेंट की डाउट है उसी स्टूडेंट को आंसर मिल जाए. एंड एंगेजिंग, क्लास हमेशा एंगेजमेंट का मतलब दे आर टेकिंग इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपने शायद नोटिस भी किया होगा, एवरी स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल अलग है, लर्निंग पेस अलग है, लर्निंग स्पेस अलग है, लर्निंग टाइम अलग है. So what is trying to say that if you could able to meet these 2 requirements and in accordance with our national education policy, many things can be done. So but all these things, मैंने कहा था skills and competences important, but what is the first one which is very, very important? The first one which is very important is this. Can I request, please confirm my voice is reaching to all of you? Right, sir? Good, sir. Sir, thank you. So what is important here? If you do not change as per the prevailing requirements of our national educational policy or education system, you can become extinct. You are no more part of the system. So what is important here is change happens. Change happens. You have to accept the change, monitor the change, adapt to the change, and very, very importantly, quickly change. Quickly change and importantly, enjoy the change. Quickly change and as well as the enjoy the change. So why I am trying to say that enjoy the change? Because change is always enjoyable. So if you do not, because I must tell you one interesting thing, हमारे सौभाग्य बात है, हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में थोड़ा इतना बदलाव के जो परिस्थिति में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, so that whatever best it is possible, if you could able to make, things can happen. Right now, what are the key provisions of my, what are the learning outcome of my session? तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? Let's try to understand what are the key provisions of technology in teaching learning, technology, key provisions of use of technology in higher education. So उच्च शिक्षा में टेक्नोलॉजी के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या प्रोविजंस दिया था, और आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, कौन सा ऐसा डिजिटल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज acquired to higher education teacher for fulfilling those key provisions. ऐसा नहीं होता कि एकदम से कर रहे हैं. तो वही चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं. हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और टेक्नोलॉजी के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातों को कहा था. तो इन्होंने कहा था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है. बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरत है. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि 2035 तक जो है 50% GER के लिए सोच रहे थे. तो ब्रिक एंड मोटर कॉलेजेस, छोटे छोटे कॉलेजेस को, छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट करने से तो ये तो हासिल नहीं हो पाएगा. So we had to go for the online learning platforms and online courses. But सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ऑनलाइन के नाम पे हर बंदा घुसे हुए है.
हर बंदा कुछ ऑनलाइन के बारे में बोल रहा है, बट ऑनलाइन मीन्स एवरीवन्स मजाक वाली बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले देखिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम सिंक्रोनस मोड ऑफ टीचिंग को सपोर्ट करता है। ऑनलाइन में ये जूम है, गूगल मीट है, वो भी सिंक्रोनस को सपोर्ट करता है। बट एसिंक्रोनस कहां से आ गई? एसिंक्रोनस मतलब नॉन लाइव, नॉन रियल टाइम इज एसिंक्रोनस। व्हाई एसिंक्रोनस इज रिक्वायर्ड? और एसिंक्रोनस का सबसे बड़ा एग्जांपल है आवर बुक्स कोर्सेस। वो अपने विद्यार्थी अपने पेस में, अपने स्पेस में, अपने टाइम में दे कैन लर्न। बट कैन वी क्रिएट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? इस बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन को दोनों को जोड़ के the national educational policy brought one more new thing called blended. And इस बीच में शायद आप सबको पता हो, the University Grants Commission has sent a small circular to all the universities and colleges, start teaching in 60-40 ratio. Please confirm, Priyanka, my voice is reaching you. Please confirm, madam, my voice is reaching. Great, great. इतना बहुत है तैयार साहब, इतना बहुत है. Okay. So then 60-40 मतलब up to 60% ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड पे, 40% ऑनलाइन मोड पे पढ़ाने के लिए कह रहे हैं. But the problem happens that is it so what are the things can go? इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है? All these things can happen in innovative teaching methodologies. सिंपली नाम लिखने से नहीं. How innovative? सर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं सबके लिए कह रहा हूं, we don't require such teachers simply reading out the content from the textbook in the classroom. Textbook is very good, but what is important is teacher has to facilitate the learning of the learners and basic level, advanced level application में जाना है. Okay, सबसे important वाली बात. So एक 20 साल पहले मैंने एक छोटा सा ऐसा ही पहलू बनाया था, that I'm showing on your screen right now. The name of that platform is, I'm just going to show you there on your screen, and the name of the platform is professorksrinivas.in. मैं इसको ओपन कर रहा हूं, profsrinivas.in. सो इसका लिंक भी मैं आपके चैट बॉक्स में, ओ गॉड आज कुछ मेरा साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी शायद साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे लग रहे. सो इट इज बेसिकली ए लर्निंग प्लेटफॉर्म. मैं इसको बाद में भी देख लीजिएगा, हो सकता है दे में बी सम डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज छुट्टी वाले दिन लोगों ने बंद करके चले गए होंगे. So what is this platform is all about? This is basically a learning management system which is facilitating the learning of the learners beyond the classroom and schedule. It is a learning management system which is facilitating the learning of the learners beyond the conventional classroom and schedule. Umender, गुड आफ्टरनून. professorksrinivas.in नहीं चल रहा है, एक बार देख के मुझे तुरंत बताओ. सो ये जो प्लेटफॉर्म मैंने जो बनाया था, इसका 2-3 कारण थे. अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट इज ए जीरो कॉस्टिंग सॉल्यूशन सर. इसके अंदर मैंने 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया था. एंड दिस हैज बीन डिजाइन, डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ Moodle लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. MOODLE. Moodle is a free open source लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. उसको लेके मैंने इस लर्निंग में इसको मैंने बना दिया था. चलिए वो बात की बात है, टेक्नोलॉजी तो सेकेंडरी. बट व्हाट इज द, मैंने आपको कहा था ना मेरा 1 घंटे का क्लास टाइम है और हफ्ते में 3 क्लासेस हैं. इस बीच में 10 छुट्टियां आते हैं और स्टूडेंट्स जो है इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, स्पोर्ट्स मीट है, ये मीट है, वो मीट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था. एंड दैट टू मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं. तो मैंने ये सोचा था कि व्हाई डोंट आई क्रिएट ए प्लेटफॉर्म, व्हाई डोंट आई क्रिएट ए प्लेटफॉर्म where I could able to access the, where the students can able to access the some part of teaching can be done through this.
some part of the teaching can be done through this. Teaching का मतलब not lecturing, sir. सबसे important वाली बात है. And this platform is a online platform facilitating the asynchronous mode of learning. It is facilitating the asynchronous mode, and that means the students are asked to access this material, and they are supporting the self-study mode. So self-study mode मतलब ये मैं I'm talking about almost 15 to 16 years back story है. ये तब से चल रही है सेट. So what the students are started asking, सर बात तो सही है, इसको तो आप करने में तो कैसे करना है. तो मैंने कहा था भाई देखिए इसके अंदर 2-3 बातें हैं. सिंपल. मैं हर चीज आपको क्लासरूम में बताना नहीं बताऊंगा. इज इट क्लियर? मैं फर्स्ट स्टेप मैंने इनको कहा था आई कांट टीच एवरीथिंग इन द क्लासरूम. कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक्स आपको पढ़ के आना है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ के आना है, कुछ एप्लीकेशन आपको पढ़ के आना है. जब आप पढ़ के आओगे देन आई विल बी क्रिएटिंग दैट. मैं आपको मदद करूंगा क्लासरूम में. मैंने कहा था मैं मदद करूंगा क्लासरूम में. दिस इज व्हाट इट हैज बीन क्रिएटेड. ओके. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज जब मैंने ये बनाया था, बनाने के बाद मैंने स्टूडेंट्स को, मेरे 4-5 स्टूडेंट्स को कहा था. सो स्टूडेंट्स ने 2-3 सवाल पूछा था. एंड नाउ मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स इन दिस कंट्री आर आस्किंग मी द सेम क्वेश्चंस. Tayada sir, these questions are asked by the faculty now also. Even today morning also NEP orientation में. तो एक फैकल्टी ने, स्टूडेंट ने कहा था, पहले स्टूडेंट ने बताया था. स्टूडेंट ने कहा था सर आपको तनख्वाह तो एक ही मिल रहा है, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम वन प्लेस, आप दो जगह काम क्यों कर रहे हो. मैंने कहा था बेटा मेरा तनख्वाह तो एक ही मिल रहा है, फिर भी आप स्टाफ रूम में आके मुझे क्लास लेते हो. आप कहते हो ट्यूटोरियल पढ़ाओ, सर एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, हमें समझ में नहीं आया. मैं कहता हूं ये सारे कामों को मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसके थ्रू. इसमें जैसे मैं क्लासरूम में आपको लेक्चर दूंगा, यहां रिकॉर्डेड, यहां एक वीडियो रहेगा, उसमें मेरा जो इंटरेक्शन रहेगा आपके साथ. तो एक विद्यार्थी ने कहा था सर कैसे कैसे कैसे. बेटा मैंने वीडियो आपको दे दूंगा, पूरा 1-1 घंटा 2-2 घंटा का वीडियो नहीं दे रहा हूं. आपको वीडियो दूंगा 15 मिनट 20 मिनट. इस 20 मिनट की वीडियो में जो आपको समझना चाहिए उसको प्रश्नों के रूप में आपको दा दूं. दिस इज सर इंटरेस्टिंग है. और एक विद्यार्थी ने कहा था सर सो मेनी वीडियोस, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग. आई सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर सो मेनी वीडियोस. ऑलरेडी वीडियोस आर अवेलेबल अंडर डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. I am taking you to the next step now. So the video content and it's already available in the public domain in the name of digital initiatives of government of India. देखिए मैं आई एम ओपनिंग समथिंग न्यू ऑल्सो, अनदर स्लाइड में आपको ओपन कर रहा हूं. सो द कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन सर. द कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन in the name of digital initiatives of government of India. अभी देखिए मैं आपका ये ओपन कर रहा हूं. Let me start sharing my screen with you. Look at this. Okay. So content is already available in the public domain in the name of digital initiatives of government of India. So मुझे क्या करना है? Whatever I am trying to facilitate you, whatever I am trying to facilitate you in the online platform, the content I am taking from the digital initiatives of government of India. उसके अंदर क्या क्या चीज इसके अंदर आएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज आएगा. हाँ चल गई क्या? चल गई क्या? हाँ मैं एक बार चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं.
हाँ, साइट चल रही है, साइट चल रही है. Thank you, thank you, thank you, thank you very much, thank you very much. So the first point, what I'm trying to say, that it's a digital initiatives of Government of India. So ये digital initiatives है. उसके बाद तैयार साहब, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? My screen is coming, sir? Okay, sir. Great, great, great. सेकंड मेरे पास बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दे हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड डिजिटल इनिशिएटिव रिपोजिटरीज. वहां से मैं डेटा ले लूंगा. और डिजिटल रिपोजिटरीज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस. चौथा जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस. 90% डेटा which I am going to use in this online platform, which is facilitating the learning of the learners beyond the conventional classroom, is getting from here. But ये तो ठीक है, और कुछ तो मैं बना दूंगा. But what is important is second slide. this second slide में देखिएगा, there are certain very very important points. हमें क्या आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये डिजिटल रिपोजिटरीज के बारे में जानकारी होना चाहिए. वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू एक्सेस द रिसोर्सेस अवेलेबल अंडर डिजिटल रिपोजिटरीज. नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल. और सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेस इन टीचिंग एंड लर्निंग. अब आपको समझ में आ रहा है? जब तक, this is what I mean to say, that digital skills and competencies for personalized and learning. क्योंकि हर टीचर को ये आना जरूरी है. जब तक ये चीज नहीं आएगा आगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा. Let's try to understand what are the digital repositories Government of India provided. First digital repository, Swayam. Swayam is a online platform which is facilitating the asynchronous learning. self study courses are available from UG से लेके PG तक. नॉन साइंसेस, साइंसेस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट तक कोर्सेस अवेलेबल है. ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट दिस स्वयं प्लस. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म. स्वयं प्लस में देयर आर very good job oriented courses are available, and I request all the participants, please join this job oriented courses which takes the advantage of it. Okay, acha, my team has confirmed me that my site is already started working. I request all of you, please open this site, and you can मैं इसका लिंक भी आपके चैट बॉक्स में दे देता हूं. चैट बॉक्स में इसका लिंक ओपन क्लिक करके एक बार कंफर्म कर लीजिए तैयारी साहब, इज इट ओपनिंग और नॉट. मैंने आपको लिंक ओपन करके लिंक दिया था, एंड प्लीज कंफर्म सर. प्रोफेसर के श्रीनिवास.in है, और चैट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है. आई थिंक डॉक्टर हरनीत, इज इट हैपनिंग? इज इट आ रहा है? And I request all the participants, please access this site for next 2 minutes. 2 to 3 minutes you have to access this site, please.
I request all the participants, please open this site, please, and check the contents from top to the bottom. And please check the contents from top to the bottom, please. And please check the content on this site, please. This is important, and everybody, as soon as you open that site, say yes in the chat box. After opening and going through the content, simply say yes in the chat box. Madam, I'm in a class, I'll call you later. And you may find out different type of material. Yes, Manisha Gogare, raise the hand. Manisha, yes, you have any question to ask? Write down in the chat box if you have something to say, Manisha. Okay, I request all the participants, please open the link and see what type of content is available over there. You may find video material, you may find text material, you may find different type of material. So what I've been trying to say here, it's a platform which is facilitating, and what is the central theme of this entire process is, this is a platform which is facilitating the learning of my learners beyond the classroom and schedule. That's a very, very important point to be noted down. Okay, that is very, very important point to be noted down. So the students are going to access the contents of this site 24 hours before the start of the class. That is very, very important. Okay, and they could able to there are some video material hai, text hai, kai sare cheez iske andar hai. So what is important to me that Manisha is saying that she could not able to see the link. Manisha, मैं दोबारा भेज रहा हूं, देखिए आपने ज्वाइन नहीं किया होगा उसमें. ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो किया था इसमें सिर्फ एक कुछ पैसा जो भी खर्चा किया था मैंने डोमेन के ऊपर, बाकी सारे कंटेंट फ्री है. बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है क्लासरूम के बाहर. ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है. ओके, so let me come back to the digital let me come back to the जो इसमें क्लास के बारे में, इसमें दो तीन चीजें हैं मैं यहाँ आपको बताना चाहता था. So let's try to understand the key provisions of technology in higher education. तो एक तो मैंने पहले ही कहा था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग। ओके, सो यहां मैं कुछ और बातों को रखने की कोशिश करता हूं। अब ये बात भारत सरकार ये कह रही है, व्हाट इज दिस ब्लेंडेड लर्निंग? द पॉलिसी रिकमेंड्स द एडॉप्शन ऑफ ए ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट दैट कंबाइंस द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये एग्जांपल है, अभी मैंने आपको बताया था ना, वही एग्जांपल है। इनको चाहिए ऑनलाइन में। अब देखिए, क्योंकि ये कोरोना काल में हमने ऑनलाइन को एडवांटेज लिया था, बट ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में, ऑनलाइन लेक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स लेक्चरिंग के लिए तो क्लासरूम थे, उसमें 60% कंटेंट वहां ट्रांसलेट हो रहे हैं, बट रिमेनिंग 40% कंटेंट वॉट एवर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, दैट इज अवेलेबल, that should be facilitated in this online mode, which is facilitating the synchronous. इसमें देखिए पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या लिखा था, this will enable students to access the learning resources anytime, anywhere, and at their own pace, time and style. सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। एंड द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स इक्विटेबल, सबको रिसोर्सेस मिलना चाहिए। हमारे एनईपी में व्हाट इज द पॉलिसी स्टेटमेंट एनईपी सेइंग? दे आर सेइंग while promoting the digital learning and education, the importance of face-to-face in-person learning is fully recognized. Accordingly, different effective models of blended learning will be identified करके हमारे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का की स्टेटमेंट है। इस बीच में यूजीसी की तरफ से एक 60-40 करके एक लेटर हमारे सबके पास आ गया था। सो 60% कंटेंट जो है फेस टू फेस में पढ़ाई है, अप टू 40% ऑनलाइन में पढ़ाई। सो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, आप एक बार मेरे इंटरप्रिटेशन को पढ़ लीजिएगा 2-3 मिनट के लिए। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन आई एम गिविंग? So by following the UGC guidelines, the teachers and institutions can ensure a balanced approach to learning that takes the advantage. क्योंकि balanced approach इसलिए मैं कह रहा हूं, because offline very important, very advantages are there, online में भी advantages है। बहुत सारे चीज हम अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, आपसे करवा दूंगा। बहुत सारे चीज हम ऑफलाइन में नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन में नहीं कर पा रहे, ऑफलाइन में, सॉरी ऑफलाइन में नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन में कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द while maintain appropriate level of engagement in each, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। सो हाउ डू वी ब्रिंग दैट appropriateness? तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें रिसोर्सेस की जरूरत है। और रिसोर्सेस की, यहां रिसोर्सेस के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको एक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों को आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूं। अब ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज होना चाहिए? ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कुछ और चीज भी होना चाहिए ना। वो क्या क्या चीज होना चाहिए, देखिए आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। So this online environment basically, because unless and until you're not clear about the theoretical aspects, no technology is going to help you. Okay, technology is like a antibiotic. Okay, so हमें तो पहले पता होना चाहिए क्या क्या कौन सा एंटीबायोटिक हमने किस लेवल तक आप किसका लेना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। The first and foremost thing which I just want to bring to your kind attention, ये जो ये देखिएगा, this is important to me। ये जो asynchronous learning platform है, इसमें resources भी होना चाहिए, activities भी होना चाहिए, which students can pursue beyond the class hours and schedule। ये first important step है। तैयार है साहब? प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज रीचिंग टू ऑल ऑफ यू सर। वासुदेव उगाले बता दीजिएगा, नहीं तो डन सर। वेरी गुड सर, थैंक यू। सो क्लासरूम में तो मैं रिसोर्सेस देता हूं, क्लासरूम में नोट्स देता हूं, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑनलाइन में तो मुझे तो चाहिए। सो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में रिसोर्सेस के साथ साथ एक्टिविटीज भी हमें देना है, फर्स्ट पॉइंट।
ये क्यों देना है, एक्टिविटी देने से क्या फायदा है? सेकेंड पॉइंट देख लीजिएगा. This process of sharing the resources and activities with the students helps the student to build the content knowledge and allows the students to apply learning in creative ways. And this is what our national educational policy is saying. Whatever we have been, whatever knowledge we have been giving, what is important for us is ensure that they can able to use this environment in their real life situations. So what is important here? In this environment, you require the pre-recorded lectures. Ek bar I request all the participants to read out the last point, please. I request all the participants, please read out the last point. So what has been given in the last one? What has been given in the last one? कृष्णाराव जी, खाना भी खा रहे हो, हमें भी खिलाओ यार. So pre-recorded lectures and e-content are particularly well suited for the asynchronous learning, as students can watch the pre-recorded sessions. So this is important to be understood. Okay. Next point is, what is the next point? That so you need to convey this message loud and clear. Is this online asynchronous platform facilitate the convenience of access to wide variety of study material? Many times what happened, we were not clear about, people are not okay, please read out this one. Okay. So second important point is it supports the learning at their own pace, space, and time and style. So this is second very, very important point to be noted down. And students are very much interested to do this kind of things. And third point is students can watch the videos and read the content multiple times to help and absorb the content. And wide variety also. And what is the last advantage of this asynchronous learning environment? Very good point. Opportunity for collaborative learning. Because, you know, in a conventional classroom, क्या होता है? Students teacher से सीखते हैं. Students fellow students से सीखते हैं. Students digital and non-digital content से सीखते हैं. Students environment से सीखते हैं. तो यहां भी आप उस तरीके का एनवायरनमेंट को खड़ा कर सकते हो. This is very, very important point to be noted down. Okay. So with this, what is important is we understood, of course, the blended learning consisting of blending of the teaching learning experiences and offline and online. And of course, yes, some content. So we will be using the 60% of the content in online mode and 40% up to 40% in online, 60% up to 60% in offline mode, using a conventional classroom teaching, supporting the synchronous mode of learning, and up to 40% content in online mode. अब इन सारे चीजों को करने के लिए हमें रिसोर्सेस की जरूरत है. One of the important source of resources is EPG Pathshala.
मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज ओपन दिस वन, ईपीजी पाठशाला, प्लीज ओपन इट. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज ओपन दिस. इसका लिंक मैं आपके स्क्रीनशॉट में, आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूं, epgp.inflibnet.ac.in, epgp दैट, क्योंकि कई सारे रिसोर्सेस है, हम कुछ रिसोर्सेस को हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. चैट बॉक्स में मैंने इसका कॉपी किया था. आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज ओपन दैट ईपीजी पाठशाला एंड कंफर्म टू मी. I have told that I request all the participants to open the EPG Pathshala link on your screen and then confirm to me, please. This is important, friends. Please EPG Pathshala को open कर लीजिएगा. तब तक मैं अगला स्क्रीन भी ओपन करके रखता हूं, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप आजकल तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है. My laptop is pretty fast, but डेस्कटॉप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं. I request all the participants, please open the EPG Pathshala link, sir, please. And this is the EPG Pathshala, one of the finest sources of information for you. Acha, before EPG Pathshala, there is one more interesting site which we call it as ugcresources.in. We call it as ugcresources.in. उसमें क्या होता है, यूजीसी रिसोर्सेस में ईपीजी पाठशाला से लेके कई सारे चीज इसके अंदर अवेलेबल. यूजीसी रिसोर्सेस, देखिए मैं टाइप कर रहा हूं यूजीसी ई रिसोर्सेस, सॉरी यूजीसी ई रिसोर्सेस. मैं आप सारे प्रतिभागियों से आग्रह करता हूं, प्लीज ओपन द यूजीसी ई रिसोर्सेस लिंक. यूजीसी ई रिसोर्सेस. ये इसका लिंक भी मैं आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, आपके लिए बहुत काम आएगा. ये भी यूजीसी ई रिसोर्सेस है. यूजीसी ई रिसोर्सेस के बारे में मैंने कहा था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये भी ओपन कर लिया. यूजीसी रिसोर्सेस भी आपने ओपन किया. यूजीसी रिसोर्सेस एक बार कंफर्म कर लीजिएगा. यूजीसी रिसोर्सेस का देखिए मैडम, मैं दोबारा भेज रहा हूं. योगिता जी, मैंने दोबारा भेजा था मैंने. I request all the participants, please open the UGC eresources.in. UGC eresources.
ये एक तो यूजीसी रिसोर्सेस में आपके सामने 27 मूक्स कोर्सेस है, 8 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। नॉन टेक्नोलॉजी मूक्स कोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, और ईपीजी पाठशाला का 67 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। चलो, अब ईपीजी पाठशाला के बारे में दोबारा, ईपीजी पाठशाला का लिंक भी मैं लोगों के दे रहा हूं, हो सकता है कई लोगों ने एक्सेस नहीं कर पाया होगा। मैं ईपीजी पाठशाला का लिंक भी आपके साथ में दे रहा हूं। ईपीजी पाठशाला का लिंक जब मैंने आपको ओपन किया था, इन ईपीजी पाठशाला में व्हाट हैपेंड एंड व्हाट फॉर वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू, बेसिक पर्पस ऑफ दिस वन इज टू गेट द रिसोर्सेस। इसको सिंक्रोनस में भी यूज कर सकते हैं, एसिंक्रोनस, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द एसिंक्रोनस लर्निंग एनवायरनमेंट ऑनलाइन में। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा। जब स्टूडेंट कॉर्नर में क्लिक करेंगे, आप देखिए आपके सामने इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। एंड यहां तक करके मुझे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ईपीजी पाठशाला ओपन करना है। ईपीजी पाठशाला ओपन करने के बाद स्टेप 1, स्टेप 2 में स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट कॉर्नर में क्लिक करने के बाद स्टेप 3 में आपको इतने सारे कोर्सेस आएंगे। इसमें आप अपने सब्जेक्ट का कोर्सेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जानबूझ के कॉमर्स को सेलेक्ट कर रहा हूं। आई एम सेलेक्टिंग समथिंग ऑन कॉमर्स। ओके, मैंने कॉमर्स को सिलेक्ट किया था। कॉमर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं। 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है पेपर, दूसरा ऑप्शन है मॉड्यूल। यहां तक कंप्लीट करके मुझे कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। कंप्लीट अप टू दिस एंड कंफर्म टू मी प्लीज। कंप्लीट अप टू दिस एंड कंफर्म। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यहां तक आने के बाद कंफर्म करना है स्क्रीन पे। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, हमारे यहां इस वर्कशॉप में 112 लोग हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी शुड बी डन एंड दे से यस। ओके, नाउ यहां देखिएगा। Now I'm going to demonstrate what is when I click on the paper box, what happens. देखिए, there are 16 papers are available here. Okay, all management papers concerned with commerce. So मुझे मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ पेपर्स चाहिए। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स में मैंने क्लिक किया था। When I click on the managerial economics, यहां देखिए 35 करके लिख के आ रहा है। That means 35 modules were already written. अब मैं 35 मॉड्यूल्स में से राइट हैंड साइड में मॉड्यूल वाली बॉक्स में क्लिक करता हूं। यहां देखिए मुझे तो 35 मॉड्यूल्स आ रहे हैं। इनमें से मुझे चाहिए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब देखिएगा मैंने स्टेप 1 में क्या किया था। आई वांट एवरीबॉडी टू वर्क अलोंग विथ मी प्लीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी शुड से यस। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या किया था। ईपीजी पाठशाला ओपन किया। द पर्पस ऑफ द ईपीजी पाठशाला इज टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी टेक्स्ट एंड वीडियो मटेरियल। तो मैंने यूजीसी ई रिसोर्सेस में गया था। वहां तो 67 सब्जेक्ट्स के ईपीजी पाठशाला कंटेंट मुझे दिखाई दी। एंड ऑल्सो 27 मूक्स कोर्सेस इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस भी अवेलेबल था। उसमें मराठी भी है। और साथ में हमें यह भी पता चला था कि उसके अंदर नॉन टेक्नोलॉजी मूक्स कोर्स, उसके अंदर भी नॉन टेक्नोलॉजी मूक्स कोर्सेस भी ना काफी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। ओके, मैं उसके बाद दिखा दूंगा ये चीज, इसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया था। ईपीजी पाठशाला क्लिक करने के बाद स्टूडेंट, स्टेप 2 आई क्लिक्ड ऑन द स्टूडेंट कॉर्नर। स्टेप 3 आई क्लिक्ड ऑन दी सब्जेक्ट्स। नीचे तो कई सारे 67 सब्जेक्ट्स में से मैंने कॉमर्स को सिलेक्ट किया था। कॉमर्स को सिलेक्ट करने के बाद देन मेरे सामने 2 ऑप्शंस आ गए। एक तो पेपर है। पेपर में मैंने 16 पेपर्स आ गया। 16 में से मैंने एक पेपर सिलेक्ट किया था मैनेजरल इकोनॉमिक्स। उसके बाद मॉड्यूल सेलेक्ट करना था। मॉड्यूल आउट ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स में 35 मॉड्यूल्स लिख रखा है।
उसमें से एक मॉड्यूल मैंने सिलेक्ट किया था इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब ये होने के बाद प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज रीचिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। तैयार है सर? डन? बिल्कुल सर। सो ये इसके बाद सर देखिए ये तीन ऑप्शंस नीचे आ रहे हैं। एक तो ई टेक्स्ट है। ई टेक्स्ट मतलब मॉड्यूल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 9 पेज के कंटेंट अवेलेबल है। 9 पेजेस ऑफ द कंटेंट यहां अवेलेबल है। इसको हम ये डाउन एरो बटन प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड बटन क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देता हूं। ओके, और ये डाउनलोड होके मेरे सिस्टम पे जहां भी मैं इसको करना चाहता था उसके अंदर ये डाउनलोड होके रहेगा। ओके, चलिए मेरे डेस्कटॉप पे आ रहा है इसका। इसको मैं काम, इसका नाम लिखता हूं कॉमर्स। ओके, चलिए ये तो हो गई। उसके बाद देखिए सर लर्न मोर, लर्न मोर में 5 पेजेस का एडिशनल मटेरियल अवेलेबल है, 5 पेज का। उसके बाद आया वीडियो। अब वीडियो को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है मैं बाद में बताऊंगा। अब ये टेक्स्ट मटेरियल है, अब तो लर्न मोर है। इन दोनों चीजों को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, ये चीज जो है मैं आपको 10 मिनट के ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन। ओके, एंड आई डोंट एग्जिट प्लीज। तो मैं अभी 10 मिनट के बाद अभी तो मेरे घड़ी में 2:02 हुआ था, 10 मिनट के अंदर अंदर दोबारा हम आएंगे, वी विल कंटिन्यू द सेशन। ओके, राइट? तैयार सर? विल बी कमिंग बैक अगेन सर, थैंक यू।
Friends, welcome back. Please confirm my voice is reaching to all of you. Please confirm my voice is reaching, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Let's continue the discussion where we have stopped over there. मैं आपको वो स्क्रीन दिखाना चाहता हूं जिसमें मैंने आपको कहा था कि वो अब तो ये चीज जो है डाउनलोड हो गई. ये तो मामूली सी बात है. अब इसको आपके पास कौन सा डिजिटल स्किल होना चाहिए? इसको गूगल ड्राइव में कॉपी करना. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मेरा स्टूडेंट्स है, मराठी मीडियम का है. मुझे तो मराठी में चाहिए, और मेरा स्टूडेंट्स कई जगहों पर मेरा स्टूडेंट्स जो है तेलुगु मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, उर्दू मीडियम का है. तो इश्यू क्या हो रहा है कि अभी देखिए इतने सारे मीडियम्स चल रहे हैं, इस इसमें इनमें कैसे हम स्टूडेंट्स को कर पाए. तो मैं आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एआई साइट. एआई जो है डेवलप कर दिया था भारत सरकार ने. इसका नाम है अनुवादिनी. मैं इसके चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आपका लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूं. अनुवादिनी का लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं. ये अनुवादिनी एक ऐसा ही लिंक है. इसमें जो भी कंटेंट आपको आपका जो है दिस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट एरियाज. ओके, एक सेकंड. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अनुवादिनी ओपन कर लीजिएगा सब लोग. ओके, अनुवादिनी एक टूल है. चलो अभी मैं आपको अनुवादिनी का डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा अनुवादिनी चलता कैसे है. मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू ओपन दिस. अब देखिए अनुवादिनी चलता कैसे है. अनुवादिनी को जब चलाएंगे, जब नीचे आएंगे, जब इसी स्क्रीन पे देखिए, मुझे फॉलो कर लीजिएगा एक एक स्टेप. आपके सामने आ रहा है टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन. You have something called text and document translation. You have something called video translation, और कई सारे. इसमें आई एम टेकिंग यू टू द टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन में. ये टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन में, इसके बाद मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं. आपको करना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल है. फर्स्ट स्टेप, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन टूल. ओके, इसको क्लिक कर दीजिएगा. ये भारत सरकार की एआई टूल है, फर्स्ट एआई टूल. उसके बाद एक यूजर नेम पासवर्ड आएगा सर, उसमें भी सिंपली आपको लॉग इन करना है. ओके, सिंपली लॉग इन करना है. अब देखिए यहां आपके स्क्रीन पे आ रहा है सोर्स लैंग्वेज. आपने जो ईपीजी पाठशाला से जो डाउनलोड किया था वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश भाषा में. अभी मुझे चाहिए मराठी में. मराठी के अलावा कौन कौन सी भाषा है? असमीसी है, बंगाली है, बोडो में ट्रांसलेट कर सकते हो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम. मलयालम के बाद एक सेकंड, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है.
चलिए अब मराठी में क्लिक करेंगे। मराठी में मैंने क्लिक, सॉरी मैं मराठी में क्लिक किया था सर मैंने। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, वो 9 पेज का डॉक्यूमेंट है, 9 पेज। तो उसको मराठी में देखिए कैसे हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक को माइक्रोफोन ऑन करके मराठी में पढ़ने का है, मराठी नहीं बोलने का है। जय महाराष्ट्र, ठीक है, सबको बोलना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक बार पढ़ना है आपको। अब देखिए मैंने अभी डाउनलोड किया था सर मैंने, इंग्लिश में पीडीएफ फाइल है, अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। सर बहुत गजब का सिस्टम है, बहुत गजब का सिस्टम है। अब देखिए ट्रांसलेट हो रही है, थोड़ा समय लगेगा। एग्जैक्टली जैसे आपने इंग्लिश में लिखा था ऐसा ही मराठी में आएगा। ये सबको प्रैक्टिस करना है, ये सबको प्रैक्टिस करना है इसको वाले पेपर, इसको इस चीज को। देखिए तैयार सर, आ गया सर। अभी देखो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं इसमें। अब देखिए सर, ये आपके सामने जो आ रहा है लेफ्ट में इंग्लिश, लेफ्ट में इंग्लिश में आ रहा है। अब राइट में, अब राइट साइड में, राइट साइड में आ रहा है मराठी में। सर एक बार इसको पढ़ने का है मराठी में, मराठी में पढ़ने का, सब लोग जिसको आता है। मराठी में ठीक से आ गया? हमारे तैयारी सर कहाँ हैं? वही बता रहे। सर इसको एक बार देखने का है। देखो मेरे लेफ्ट में सब इंग्लिश में है सर, मेरे राइट में मराठी में है। सामग्री सरणी, मुझे मुझे थोड़ा बहुत तो मराठी बोलना आता है। शिकण्याचे परिणाम, ओके, परिचय, टंचाई, स्कॅर्सिटी, उत्पादनांचे घटक, ओके। 5वें नंबर में गरजा आणि इच्छा, 6 नंबर में मूलभूत अर्थ आर्थिक प्रश्न, और 7वें नंबर पे सांझी कीमत, 8वें नंबर पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन शक्यता, सेवरेशन, और समरी सारांश। सर पूरा मराठी में आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात इसके साथ सर, यही कमाल है टेक्नोलॉजी का, यही कमाल है ये का। इसको डाउनलोड कर लो, ये सीधा हमारे स्टूडेंट्स को दे दो ना, वो मराठी में जब पढ़ेंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। तेलुगु गारू स्पीकिंग मराठी। द्विवेदी जी, मैं मैं 8 भाषा बोल लेता हूँ साहब, 8 भाषा बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत मराठी समझ लेता हूँ, ज्यादा बोलता नहीं हूं मैं। हाँ, और देखो कम से कम बोल तो रहो आप में से। See, it is not suitable for word-to-word translation. Somebody is saying that. The point is, this is AI. Overnight, you cannot create AI, sir. You cannot create overnight AI. यहां तक बोलने में तो आपको कितना समय लगा होगा, राइट? सर
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस ए फैसिलिटी अवेलेबल, यूज करना नहीं करना आपके ऊपर है। हमारे मैं महाराष्ट्र सरकार का कई सारे कमिटीज का मेंबर भी हूं, मुझे पता है क्या क्या चीज तो महामूक करके कई सारे कमिटीज के हैं, इसके अंदर मैं भी मेंबर हूं। माय पॉइंट इज दैट देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल, वी शुड नो हाउ टू यूज इट। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारे, व्हाई वी नीड ऑल these things facilitate four things: flexible learning, adaptable learning, personalized learning, and engaging learning experience. मैं एक आपको बात बता दूं, मैं पैदाशी हिंदी भाषी नहीं हूं, पैदाशी अंग्रेजी भाषी भी नहीं हूं। पिछले 55 सालों से 8 भाषाओं में लिखता हूं, पढ़ता हूं, बोलता हूं। ये रातों रात नहीं हुआ, ये सारी चीज, ये मेहनत है, ये कोशिश है। क्योंकि इसी की वजह से मेरे वाणी को पूरे पूरे भारतवर्ष में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में लेके जा रहा हूं। तो हमारे द्विवेदी साहब कैसा ही कह रहे, तेलुगु गारू मराठी बोल रहे हैं, बिल्कुल तेलुगु गारू तमिल बोलता है, तेलुगु गारू उर्दू बोलता है, तेलुगु गारू हिंदी बोलता है, तेलुगु गारू कन्नड़ बोलता है, तेलुगु गारू पंजाबी बोलता है, तेलुगु गारू मराठी गुजराती बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये आना चाहिए हर टीचर को, ताकि हम आपके जो एक्सपर्टीज जो है कुछ ही जगहों पर क्यों हैं। हाँ, कई लोगों ने कहा था सर ये तो अभी ओनली 10 पेज है। सर आपको 1000 पेज चाहिए अब्दुल साहब, आप सीधा उसका, उसके अंदर नीचे एक वो ऑप्शन अवेलेबल है, एक क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस है, वो ईमेल एड्रेस वाले को लिख लीजिएगा, वो अपने आप वो आपके लिए तो हो जाएंगे, करा देंगे। ओके, what I'm trying to say that these things are possible, these things are possible, and you should take the advantage of these things very very importantly. I am giving you 5 minutes time. I request all the participants to test this Anuvadini tool. उसके बाद मैं आपको और भी चीजों में लेके जाऊंगा। This is very very important. I want every participant to work on this. And after Anuvadini, there is something, we have very interesting things called नॉन टेक्नोलॉजी मूक्स। अच्छा, यहां देखिए 27 मूक्स कोर्सेस इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस, 27 मूक्स कोर्सेस इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट you can learn also, so you can learn also many things। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात इसके साथ देखिए क्या है, 27 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में ये चीज अवेलेबल है। when you click on this 8 Indian languages, you can, there is a link available over there, and you can work on that. So similarly, you have something called non-technology MOOCs courses. You have something called non-technology MOOCs courses. यहां भी आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। मतलब स्नातक में, मतलब यूजी में 243 कोर्सेस मिलेंगे, 243 कोर्सेस आपको मिलेंगे, और स्नातकोत्तर में 137 कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे। ओके, सो यूजी में यू गॉट 243 कोर्सेस, एंड आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस जब मैं लिखता हूं, अब इसमें देखिएगा इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, इसमें ई टेक्स्ट भी है सर, इसमें ई टेक्स्ट भी है, इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी है, ई टेक्स्ट भी है, इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल दोनों है। ओके, I think what I am trying to say, this is the way we can make use of this material resources which are available for your students. Okay, no, so मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। I request all the participants to spend some few minutes on this one. आपको क्या करना है, ईपीजी पाठशाला, अनुवादिनी, और नॉन टेक्नोलॉजी मूक्स कोर्सेस, एंड 27 मूक्स कोर्सेस इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। ये भी अब देखो 27 मूक्स कोर्सेस इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस का भी मैं आपको करके दिखा दूंगा।
एंड ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, इसमें एकेडमिक राइटिंग है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, आप एक बार जरा देख लीजिएगा. आप देख लीजिएगा, आपको मैं एक और चीज दिखाने वाला हूं. ये जो I request all the participants to pay attention on the screen, please. ये मूक्स कोर्स है. ये मूक्स कोर्स में जब आप ये तो इंग्लिश में तो रिसोर्स पर्सन बोलेगा, आपको नीचे स्क्रिप्ट मराठी में आ जाएगा. ये स्क्रिप्ट आपको मराठी में आता है. Welcome, dear learners. Welcome in the very first week of our MOOC on academic writing. This week, we are here with the two modules. In the module 1, Introduction to Academic Writing, we will be introducing the concept of academic writing. We will be covering what is writing and what is academic writing skill. मराठी में आ रहा है, नहीं आ रहा है? How it is different from simple writing. What are the types of academic writing? What are the basic? ठीक है, ये सारे चीज अवेलेबल है इस तरीके से. इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इन सारे चीजों को yes, you can, sir, definitely. You will get the certificate, you will get the certificate also. Okay. So my request to all of you is, please spend another 5 minutes on uses UGC resources. UGC resources. And ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा. उसके बाद मैं आपको वीडियो को इंटरैक्टिव कैसे बनाना वो बता दूंगा. Your time starts now. Please go ahead. Next 5 minutes, next almost 5 minutes, I'm not going to speak anything. Please go ahead.
I think people have said done. Good, 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 good. Now another interesting and very, very important point to be noted down is, fine, now you have text material. Now the text, we want to, we are using, we understood that how to use the text material also. That's not a problem. But there is a video content available. There is a video content available. But the question comes, so how to create an environment which is where videos can be used much more easily and comfortably. But before that, some of the important tools which you all needed, I'm going to show you on your screen. Okay, and these are the things which I want you all need to understand before we can move further. All right. Now I'm going to show you the tools which I'm going to show you on your screen. Some of the tools are which will be very much helpful and useful for you are, some of the tools which will be helpful and useful for you are, look at this. Look at this. The first and foremost thing is, we all must be having an understanding of, to create this online asynchronous learning environment, you need a learning management system or content management system or simple website, a blog kind of a thing. And all this material is available there on my website. Okay. So there are several sites are available. If you are interested, you can note down these things. So for example, if you want to use, if you are interested in using the Moodle learning management system, you can use you can register in a free Moodle cloud site, www.genomio.com, and we can able to use it. Similarly, if you want to use if you want to try with Canvas, Canvas is another interesting learning management system which can be tried and which can be used. Okay. And if you want to try with some open edX kind of a platform, ये use कर सकते हैं. I hope you have been noting down. I hope you have been noting down these things. Then, okay, if you don't want to go with a high-end kind of a thing, you can use WordPress. WordPress is one such platform which can be used very easily. Joomla, आप Joomla ट्राई कर सकते हो. इससे आप very आसानी से वो asynchronous learning platform को set कर सकते हो. Joomla is one such platform which can be used very easily. Okay. Now, चलो ये भी नहीं करना है. One of the easiest way to go for the Google sites. And the last one is Google Classroom. Okay. So let me repeat back. Google Classroom, Google Sites, Joomla, WordPress, Open edX, Canvas, and Moodle. Which are the option second and third? अभी देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूं सर. First one is Genomio. Second one is Canvas. Third one is Open edX, WordPress, Joomla, Google Sites, Google Classroom. So any one of these options can be used to make it interesting. Okay. Now there is one more important resource which I forgot to mention about is open educational resources. Open educational resources. Policies के बारे में तो बहुत clearly कहा था, क्योंकि content need not be created in the first instance.
there is an excellent quality content is already available. You can able to make use of that content. But हमें क्या आना चाहिए? उस content को use करना पहले हम सबको आना चाहिए. How to use that content? यहाँ मैं आपको open ये जो OER के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. This is very, very important. This is what the policy statement which said, our policy said, so that policy ने तो कहा था, but policy को implement करने के लिए क्या करना चाहिए? So every teacher must be having understanding of OER, understanding the Creative Commons licenses, and also hands-on experience सबको आना चाहिए. यहाँ एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगा which is very, very important about the OER. And I request all the participants to please spend some time on this one, watching this video. I'm making it slideshow, all of you. Please watch this one carefully. This is basically introducing the, Creative Commons licensing. Have you ever wondered how to download and share digital content legally? Sound is coming. How do you let people know that you want them to reuse your own work? Creative Commons licenses can help you do both. We'll show you how. Our world's exploded with digital opportunities. Now we can communicate, share, and work together using the exceptional distribution network that is the Internet. Information and content can fly between us in exciting new ways. But it's important to know that when something is created, say a photo, a document, or a music track, it's automatically protected by copyright. Copyright enables people to say who can share and reuse their creations. You must always obtain someone's permission before sharing or reusing their work, even when it's posted online. But what if a creator wants everyone to use their work without the hassle of granting permission over and over? This is where Creative Commons can help. Creative Commons provides licensing tools that are free to use. You can apply a license to your work, which refines your copyright and streamlines how you give permission. Zach here downloads a photo called CC Kiwi that he wants to use in his science project. He can do this without asking Kerry, the photographer, first, because she's already given permission with a Creative Commons license. Kerry's license is legally robust, but easy for Zach to understand. She's told the world, including Zach, that they can use CC Kiwi as long as they acknowledge her as the original photographer. There are more rules Kerry could have included. Creative Commons licenses are made up of license elements. You can think of them as rules, and each have their own special symbol. This is attribution. It means that Zach must acknowledge Kerry when he publishes his science project containing her photo. This is non-commercial. It means no one else but Kerry is permitted to make money from CC Kiwi. Tim wants to print the photo onto t-shirts and distribute them to friends. He can do this, but he must not sell them. This is no derivatives, and it means that Kerry hasn't given permission to change her photo. Kate can use CC Kiwi on her design blog, but will need to ask Kerry before retouching or mixing up the image. And this is share alike. It means new creations that use CC Kiwi need to carry the same license. Jack incorporates his own remix of CC Kiwi in his video installation, but he must share the work under the same terms that Kerry has. Each Creative Commons license gives permission to share and includes the attribution rule. So people who find your Creative Commons licensed work are automatically allowed to share it, but are required to acknowledge you if they do. The other three license elements are optional, and you can choose which ones to add, if any. Here are the 6 combinations that make up Creative Commons licenses. The difference between them is how many rules apply when someone wishes to use your work. The attribution license allows reusers the most freedom, and the attribution non-commercial no derivatives license allows the least freedom. The attribution license and the attribution share alike licenses are sometimes referred to as free cultural works approved licenses.
These 3 licenses restrict commercial use of a work. And these 2 licenses do not give permission for adapting or remixing. These 2 licenses require new works to be licensed under the same terms. To choose and apply one of these licenses, and to view their terms in more detail, visit us at creativecommons.org.nz. Or you can answer some questions to help you decide which license best suits your needs at creativecommons.org/choose. There are some good ways to find other people's Creative Commons licensed work online. You can use a search filter by going to the Creative Commons website. Or why not try the Jamendo website for music, Flickr for images, or Digital NZ for New Zealand content. Using Creative Commons licenses could help your creations reach more people. Maybe you want to connect with others across the globe and take turns at improving a report. Or maybe you just want to have fun, remixing someone else's work. Whatever reason you have to share your work, you'll find there are scientists, educators, companies, and public agencies who are using Creative Commons. By opening up permission, just imagine how much we can achieve. Collaborating on what we hold in common, being open about big decisions, and finding solutions in the spaces between us. Let's work together, confidently and legally. It's good to share with Creative Commons. Okay, now, so this is about, so this is about the Creative Commons kind of a thing. Now, I will be taking you to the next interesting thing called, now you have something called videos. You have something called videos. Now, the video, there is a text material and video material. Most of the time what happened, we have been using the video material with the students. So the question comes, how to make that video interactive? अभी तक हमें तो क्या पता था कि वीडियोस आर कंप्लीटली सिंपल वीडियोस हम सबको मिल रहे हैं. अब इशू क्या हो रहा है कि ये वीडियो जो है ना, जो भी ये वीडियोस हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये वीडियो सारे जो है नॉर्मल, इसमें कई सारे चीजें. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी क्रिएट दिस pedagogical design as envisaged by the NEP 2020 to bring something in learner-centric mode? Okay, so what I am trying to say, what are the effort to be? So one of the very important point in the national educational policy is a learner-centric approach. Okay, so apart from the theory, there are certain things which I am going to use this learner-centric approach. So there are several models are available. I want to run one interesting video with you all. I request all of you, please watch this video carefully. This video facilitates how to create the learner-centric approach. How can we change our video content into learner-centric approach? This is what it is coming on your screen. I request you to kindly watch this video carefully, and it has been done with by the IIT. So please watch this video carefully. This is one of the very important approach. Watch it carefully. I am running this video, please. When we are creating our MOOCs, it is not sufficient to simply focus on information transmission and making accessible the various activities that one would do in a classroom. It is necessary to ensure that we follow learner-centric principles. The LCM model helps instructors to create MOOCs which are learner-centric in nature. The
The LCM model consists of learning dialogues which promote concept attainment through learner interaction, learning by doing, which is a formative assessment activity, learning extension trajectories which advance learners' learning along diverse paths, learning experience interactions which cultivate peer learning through focused discussions. In addition to these elements, it is important to keep in mind the orchestration. That is, the process by which the course team designs the interactions for the learners as well as assists and guides the learners through the MOOC. Now that you have seen the different elements in the LCM model, imagine a typical classroom scenario. Can you identify one or more of these LCM elements in this scenario? Pause the video and write down your answer. After you are done, resume. Some of you may have thought of lectures and demos. Some may have thought about activities. Others may have thought about additional resources that are provided, and some may have thought about discussions. Now, let us see how these map to the LCM model. In going from the traditional model, be it a classroom or a MOOC, to the learner-centric MOOC model, what we need to keep in mind is, instead of simply creating lectures and demos and making them available, we now create learning dialogues or LEDs. Instead of simply making activities and homeworks available to students, we now create learning by doing activities or LBDs with customized feedback. Instead of simply making discussion forum platforms available to students, we now have learner experience interactions or LXIs. These are driven by focused questions and exploit the power of peer learning. Instead of simply making some resources available to learners, we now have learning extension trajectories or LXTs. Okay, I'm stopping this video here. So we want to see that how practically to implement these ideas. To implement these ideas practically, a few important things required. So let's try to understand what are those software applications are available so that we can understand the things much better. I'll be taking you to 3 slides also. I'm just skipping all these slides. Okay, so the first thing is how to prepare. So how to develop the interactive learner-centric e-content. Basically, my purpose is to talk about the video content only. Okay, interactive video content. Okay, so learner-centric video, how to develop this. So there are several applications are available. One of the important application which you all need to you can understand well is Edpuzzle. I'm sharing the link in your chat box. I request all of you, please. This is called Edpuzzle. There is a small video I'm running on the on Edpuzzle. Okay, so please watch that video carefully. And it's a very simple 1-minute video only, but it talks about very interesting and important things. Okay. So I request all the participants, please watch this introduction to Edpuzzle, and all these videos are available on my site also. Okay. So introduction to Edpuzzle. There is a small video which it's very interesting. Yeah.
My god, I'm obsessed. Today I'm going to be trying out Maybelline's new Super Stay Lumi Matte Foundation. Is it lightweight? Yes. Is it transfer proof? Yes. Does it last for 30 hours? Yes. This is the foundation of my dreams. Kids these days are learning how to do almost everything through video. Watch this video carefully, Videos please. feel personal, are highly visual, and let you control the pace at which you learn. But when you try to show a video in class, you might not always get the best results. Please watch this Sometimes video it's hard carefully, to know if please. students are paying attention or if they're actually learning anything. But with Edpuzzle, turning a video into a dynamic lesson is easy. You can add questions anywhere in your video, so you can check comprehension and get students to engage in critical thinking. You may not always have time to find a video and add your own questions. But don't worry, the entire Edpuzzle community has got you covered. Scroll through our library of teacher-created content and get inspired by what other educators like you are doing in their own classrooms. Or choose from our standards-aligned Edpuzzle originals, instructional videos with built-in practice created with you and your students in mind. With the time you save, you can focus on other important things. Sometimes the video content you're looking for doesn't exist yet, so why not try making it yourself? Edpuzzle's screen recording tool lets you create the video that fits your students' needs. When you're done, you can edit the video and embed questions all in one go. Your students will appreciate seeing a familiar, friendly face as they learn. Once you're ready to assign your lesson, that's when the magic happens. You can hold students accountable for watching the entire video and monitor as they watch it at their own pace. Then, use Edpuzzle's real-time analytics to figure out who's ready to move on to the next lesson and who needs a little more help. That way, you can decide how to best use your time in the classroom. So, the next time you want to assign a video, let Edpuzzle be your guide. You'll be joining a network of educators who are changing the face of 21st century teaching, one video lesson at a time. Please watch the video once again, please. Kids these days are learning And how please to do confirm my almost voice is everything reaching through you. video. Video voice is reaching you. Videos feel personal, are highly visual, and let you control the Video pace voice at is which you reaching learn. you, all of you. But when you try to show a video in class, you might not always get the best results. Sometimes it's hard to know if students are paying attention or if they're actually learning anything. But with Edpuzzle, turning a video into a dynamic lesson is easy. You can add questions anywhere in your video, so you can check comprehension and get students to engage in critical thinking. You may not always have time to find a video and add your own questions, but don't worry, the entire Edpuzzle community has got you covered. Scroll through our library of teacher-created content and get inspired by what other educators like you are doing in their own classrooms. Or choose from our standards-aligned Edpuzzle originals, instructional videos with built-in practice created with you and your students in mind. With the time you save, you can focus on other important things. Sometimes the video content you're looking for doesn't exist yet, so why not try making it yourself? Edpuzzle's screen recording tool lets you create the video that fits your students' needs. When you're done, you can edit the video and embed questions all in one go. Your students will appreciate seeing a familiar, friendly face as they learn. Once you're ready to assign your lesson, that's when the magic happens. You can hold students accountable for watching the entire video and monitor as they watch it at their own pace. Then, use Edpuzzle's real-time analytics to figure out who's ready to move on to the next lesson and who needs a little more help. That way, you can decide how to best use your time in the classroom. So, the next time you want to assign a video, let Edpuzzle be your guide. You'll be joining a network of educators who are changing the face of 21st century teaching, one video lesson at a time. Okay, let me come back to the other interesting important point to be noted down.
let's try to review what all the things which we have discussed when we are. So we started, because last half an hour I'm going to show you. I'm going to show you the Edpuzzle link also once again. No, don't worry about that. But before that, let me try to share it with you. One interesting thing about this one is, I started with the interesting part of technology enabled in higher and integration of technology in higher education. So already some efforts we have been doing in our classroom, but what I've been suggesting is, as per our national educational policy, these efforts are not enough to meet the expectations of the students. So what we can do is, we can create an environment which is flexible, adaptable, personalized, and create the engaging learning experience. In doing so, what is need to be done? And that also our national education policy is encouraging us to start offer some of the courses and in blended mode. So we understood what is the conventional classroom, which is supporting synchronous mode of learning, which is a real time. Also, in online, we have two options, I have told. One is conventional, one is on online classes, which is supporting the synchronous learning environment. Both students and teachers are available online. And second one, we have something called asynchronous online environment, which is supporting the asynchronous mode of learning. To create this environment, you must be having either a learning management system or a content management system, for which I had given you a list of softwares. उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि ये जो ब्लेंडेड मोड ऑफ स्पीच पे यूजीसी ने भी आपको हमें कहा गया था कि 60-40 रेशियो में पढ़ाइएगा. सो 60-40 रेशियो में पढ़ाने के लिए हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वाली बात इसलिए है कि अप टू 60% कंटेंट इन ए फेस टू फेस एनवायरनमेंट, अप टू 40% कंटेंट इन दी ऑनलाइन एनवायरनमेंट. तो यहाँ सबसे बड़ा दुविधा इस बात की हो गई कि कौन सा चीज 60 में करना है, कौन सा चीज 40 में करना है. इसके अंदर ज्यादा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं. मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया, आप अपने लेवल पे सोच लीजिएगा. मैंने क्या बताया था, हम कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाएंगे उसको 3 स्तरों में समझाते हैं, बेसिक, एडवांस्ड, एप्लीकेशन. और हर स्तरों में व्हाट वी हैव बीन सेइंग, वी आर एक्सप्लेनिंग ऑन कॉन्सेप्ट, आइडिया, स्किल एंड टास्क. What I'm trying to say, so if you find that explaining the concept in the classroom is not meeting the requirements of the students, आप सीधा उसको वीडियो ढूंढ लीजिएगा. वीडियो को सर्च या बनाना मैं हमेशा प्रेफर नहीं करता हूँ. वीडियो को, एग्जिस्टिंग वीडियो को पहले यूज करना सबको आना चाहिए, सबसे बात है. और उसके बाद देन उसी वीडियो को ऑनलाइन में उस वीडियो को पहले आप एज ए टीचर आप पढ़ लीजिएगा, नंबर 1. नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, इस वीडियो वेयर इट इज गोइंग टू फिट. इज इट यूजफुल टू एक्सप्लेन द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इज इट यूजफुल फॉर द एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इज इट यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? यू मस्ट नो. इससे क्या होता है, when you provide this kind of resources through the students and encourage them to work, इसके अंदर 2 फायदे हैं. Because the activities and resources you are providing to the students outside the conventional classroom. What is the advantage here? One of the biggest advantages, learner can learn, learner can access the resources अपने time पे, अपने pace में, अपने space में पढ़ेंगे. And they can watch the video multiple times to absorb the content. And उसके बाद मैंने आपको एक और concept बताया था कि learner sharing the resources before the class is flipped mode of teaching. But I'm only not confining to the flip mode. मैंने आपको क्या कहा था,
फ्लिप के साथ साथ आपको मैंने कहा था उसी कंटेंट, वो जो रिसोर्सेस आप जो दे रहे स्पेशली वीडियो रिसोर्सेस, उसको इंटरैक्टिव बनाओ। इंटरैक्टिव का मतलब है वीडियो के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हो। अभी मैंने आपको एड पजल में करके दिखाया था। एड पजल में बेसिकली दैट फैसिलिटी इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर, where we could able to provide this information. So where in Edpuzzle what happened, we could able to provide this information. So in Edpuzzle what happened, we could we are giving the video to the students, number one. Secondly, that video became interactive. और ऐसा ही हमारे सामने एक और इंटरेस्टिंग फीचर है। उस फीचर का नाम है, उसका नाम है Lumi for Education. Okay, so I'll show you once again those two things also. One is about, I have already told you about the Edpuzzle के बारे में बता दिया था, और एक और इंटरेस्टिंग वाली बात मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं। उसके नाम है Lumi for Education. Lumi is again another interesting thing which we all of us can able to okay, well, let me cancel this. We don't require all these things. अब देखिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको हर चीज यहाँ तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। Okay, what I'm going to show you, then another interesting tool called Lumi for Education. ये भी नोट कर लीजिएगा. This is again another interesting site where using this, ये सारे बहुत आसान है यूज करना. But what I am trying to say that ये don't think that they will be something like कोई rocket science. No, not at all. They are all not a rocket science. But what is important is you all must be having that zeal, passion, patience, and perseverance to take this one further. So let me show you that Lumi, Lumi for Education. Simply आपको इसको ऐसे टाइप करना है. If you simply type Lumi for Education, एक आपका साइट इसके अंदर आ जाएगा. Lumi के नाम पे एक साइट आ जाएगा. And this is again a very interesting site for you also. So there is a small interesting video is also available on the Lumi. And Lumi desktop में काम कर सकते हैं आप, क्लाउड में भी आपको काम कर सकते हैं. डेस्कटॉप इज मोर कंफर्टेबल. यहाँ एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ, एंड इसका वीडियो लिंक भी आपके शेयर. Hi and welcome to Lumi. Our mission is to make education accessible, individual, and exciting. For this mission, we provide you with tools and editors to create interactive and engaging content. Let me show you what you can do with Lumi. You can enhance your videos with interactive elements like multiple choice questions, मैं 2 बार चला रहा हूँ, provide feedback, and make sure the essential information is understood before continuing the video. You can build presentations with different task formats like single choice questions with instant feedback, or fill in the blank type. Allow your learners to view the solution, and include videos for further explanation. Give feedback and let your learners make mistakes. Vary the difficulty of the tasks by choosing different formats like drag and drop, and individualize the learning process. Use multiple choice questions, and give an overview with a scoreboard. After creating your content, you can make it available with a simple click. Choose to receive the answers or protect your content with a password. Share your content with a link, print a QR code on your worksheet, or embed it on your own homepage. If you activate the data collection, you get insights and receive answers from your learners. Get an overview and see how your course is performing.
With Lumi Flow, you can create a flow by grouping and arranging your content into a stream of information and activities for your learners. Immerse your learners, get them involved, and let them enjoy the process of learning. If you need inspiration or get content from other authors and educators, use the Lumi Content Hub to find exciting content. You have complete ownership of your files and can download your content as H5P files and also edit them offline with our Lumi Desktop Editor. Your content as H5P is compatible with many major LMS like Moodle, WordPress, or It's Learning. These are only the core features of Lumi. Register for free and explore Lumi on your own or get more information on our homepage. Thank you for watching, and we hope you create amazing content. Hi and welcome to Lumi. Our mission is to make education accessible, individual, and exciting. For this mission, we provide you with tools and editors to create interactive and engaging content. Let me show you what you can do with Lumi. You can enhance your videos with interactive elements like multiple choice questions, provide feedback, and make sure the essential information is understood before continuing the video. You can build presentations with different task formats like single choice questions with instant feedback, or fill in the blank type. Allow your learners to view the solution and include videos for further explanation. Give feedback and let your learners make mistakes. Vary the difficulty of the tasks by choosing different formats like drag and drop and individualize the learning process. Use multiple choice questions and give an overview with a scoreboard. After creating your content, you can make it available with a simple click. Choose to receive the answers or protect your content with a password. Share your content with a link, print a QR code on your worksheet, or embed it on your own homepage. If you activate the data collection, you get insights and receive answers from your learners. Get an overview and see how your course is performing. With Lumi Flow, you can create a flow by grouping and arranging your content into a stream of information and activities for your learners. Immerse your learners, get them involved, and let them enjoy the process of learning. If you need inspiration or get content from other authors and educators, use the Lumi Content Hub to find exciting content. You have complete ownership of your files and can download your content as H5P files and also edit them offline with our Lumi Desktop Editor. Your content as H5P is compatible with many major LMS like Moodle, WordPress, or It's Learning. These are only the core features of Lumi. Register for free and explore Lumi on your own or get more information on our homepage. Thank you for watching, and we hope you create amazing content. Hi. Oh, sorry. Okay, this is the video which I've been talking about. Please confirm my voice is reaching to all of you. Please confirm my voice is reaching to all of you. Just confirm at least 1 or 2 people in the chat box. Great. So I'm going to show you how this interactivity can be done with an example, because we have a limited time left over here. So similar to Lumi, there is another option available for us, is we call it as H5P. Okay, there is something called H5P. I'll show you one of the video how it works on how the entire process will work. You can also do much better than this, but Edpuzzle is much easier. Lumi is also much easier, even similar thing. So I'll show with a simple example. H5P is a HTML5 content. Okay, here I'm going to show one video which is already made. They made it as an example, made it as an interactive.
So how to prepare a smoothie? Okay, watch this one. This is basically a HTML5 based. This is interactive video, demonstrate some of the key features. Okay, so how can we use this video and all? How do we create that smoothie kind of a thing? I'll show one example here. This is the video, and I request all the participants, please watch the video. Later I'll ask you the questions. Please watch the video carefully. Please watch the video carefully. I'm running the video. Okay? Watch it. No voice. Watch it. Ingredients list. Question later. Question I'll ask later. Watch it. We have summary. Now, I request all of you to watch it once again. Third time, I'll be asking the question. Hope you have been watching. Hope you have been watching. Yes, in the chat. Okay, now I am running this video. Now I am running this video again, and now I'll be asking you the questions. Okay, watch it. Ingredients. Watch the ingredients carefully. Now preparation. Watch it. Preparation carefully. Now the video was paused. Yes. Highlight the ingredients that has been added so far. Tell me, what are the ingredients it has been added so far? Let me say strawberry. I think let me say the questions. Blueberry. Somebody is saying not strawberry, blueberry. Okay, check. Yes. Okay. And what is the option here? If you want, you can watch the video again. Okay. Strawberry and blueberry has been added. Very good. Very good. Wonderful. Wonderful. Let's continue. If you want, you can watch it, or otherwise we can continue the video. Okay. Fine. After this, let me move on. Let me move on.
Sorry. One minute, hold on. There is something called fill in the blanks. Okay. Now tell me what all the things can be added. Strawberries and blueberries. Okay, very good. BLUE mixed with second line MILK milk and cookies COOKIES. Okay, let's see. Check. All correct. So blueberries, milk and cookies. Fine. Excellent. Let's move. Now let's move. Its mixing has been done. Now there is a drag and drop. Tell me, drag and drop the berries used in the recipe of the picture. Tell me, what are the things can be dragged? I'm waiting for your answers. Second one, okay. What else? What is one? Strawberry and blueberry. Okay, let me take these two. Show the scores. Third one, yes. Got it. Congratulations. Strawberry and blueberry, both are correct. Now, that video is moving on. Okay, now, okay, finally serving tips. What are the added tips are there? Add few berries on the top of the glass and all. Fine. Finally, summary. Okay, now tell me the summary statements. Tell me the summary statements. So what would be the first statement? What would be the first statement? Second one, okay. Then afterwards, second one, okay. Again, what would be the last statement? What would be the last statement? Last one. Exactly. Correct. Right? So my point is that I think we'll stop sharing it, and it gives you answers also to you. So what I'm trying to say in this context is you can create this kind of environment to make it interesting, innovative, and creative for your students. So 3 softwares I explained. So very simple. There is no much effort is required as far as these softwares are concerned. Okay. So my request to all of you is you can create this environment with much ease. There is no much effort is required to create this kind of environment. Okay. So my point, what I'm trying to say that if you do not change as per the prevailing requirements of the students, soon we became obsolete. So one of these small, what are the changes should be done? So whatever best it is possible, already many of the teachers, हम सब लोग जो है classroom में उस तरीके का environment को create कर ही रहे. But only classroom is no more, because now under students के लिए एक empowerment है called ABC, Academic Bank of Credits. Within 7 years, students can earn the 50% of, after earning the 50% of the credits, they can earn the rest of the things from the options like online courses.
They can learn, they can get the things from the online courses. But what I'm trying to say that if you want to create that kind of environment, so ये सारे चीज ऑनलाइन में तो ऑलरेडी बुक्स कोर्सेज स्टूडेंट ले रहे. सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे क्लासरूम में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने से things can be happening in much more easy and comfortable manner. Friends, I'll stop it here. If you have any quick question, comments are there. I will try to answer. I will conclude my session by 3:30. So मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स बताया था, बट सॉफ्टवेयर से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि यू शुड बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स and expected outcome should be very clear. Once your objectives are clear, expected outcomes are clear, then you try to search for a tool which will be facilitating you to learn the things in a different manner. Okay, I think that's important. So the heart of the national educational policy state provisions on technology is that every teacher must get the requisite skills and competencies to absorb these things and deliver in the classroom. Abhi ye workshop, why we are conducting this workshop? Oh, I think we are from faculty from Tamil Nadu. Romba Nandri sir, Sarvananda sir. Tamil. Oh, wonderful. So my point, what I'm trying to say here is, so there are certain key provisions are there. But what I'm trying to say that these provisions cannot happen just like that. So you should make an effort. You should make a sincere effort to translate your class into different class. And please try to understand, excellent resources already here. Excellent textbooks are already available. If you do not add your value addition into those resources, again I'm saying we became obsolete. So always try for the best. और हमेशा अच्छा दूसरी बात है, people of I know very well that people often says that sir there are issues, challenges, concerns. Let me tell you one thing. The issues, challenges and concerns are there in the past, will be there in the future. Issues, challenges, concerns are there in the past, will be there in the future. But if you want to become a teacher who wish to deliver the things, so try to learn from the challenges. Today, you see, I started my session. There are so many technical issues. I never experienced these things with my laptop. But thankfully, I'm using a desktop which was not used for so many things. And second point, whether you are teaching sciences, social sciences, humanities, engineering, medical, law, management, because I'm a professor of computer science, always try to spend some time on application level of understanding. Application level of understanding. Because if the moment we give some application level, demonstrate some of the applications, then naturally the students will be impacting more. That's all, friends, I wish to say. And I'll stop it here. Thanks to the director and thanks to Dr. Rafe for providing me the opportunity to interact with you for 2 sessions. And of course, many of the faculty members thoroughly enjoyed interacting with you all. Wishing you all the very best. And you must be having a great future. And please listen, implement all these things. And we will soon see you somewhere in this one. Thank you very much. I stop it here.
Thank you so much, sir. So, move to vote of thanks. So, behalf of Dr. Babsam Ambedkar Marathwada Vidyapit, Chhatrapati Sambhajinagar, UGC MMTTC. A special thanks to today's resource person, Professor Srinivas sir, sparing the valuable time here. Has a very motivational, intelligent lecture. Thank you so much, sir. Yeah. Okay. So, participant, you can leave. हॅलो सर. Yeah, sir. बोली सर. सर ते डॉक्युमेंट अपलोड करण्याच्या संदर्भात थोडं सांगाल का प्लीज? सर मला कॉन्टॅक्ट करा. माझा नंबर आहे तुमच्या व्हॉट्सअप मध्ये टाकला. बरं सर. मी पर्सनल तुम्हाला इन्फॉर्म करतो.